In the previous lecture, we were discussing, we have started, in fact, Rn Euclidean space or n space. I told you some basic operations, kind of the elements of Rn. Rn is called n space or Euclidean space, or this is called n space, or you can say it Euclidean space. It is basically of the form, it contains the elements of the form x1, x2, so on, xn, such that each individual components of this vector x1, x2, so on, xn, they are all individually, they are all real numbers. Okay? So the elements of this space are usually called vectors, and we denote them by small alphabet letter x and bar above it, just to show that it is a vector. For how do we define addition? Addition in Rn is basically, how do we define? How we add two elements of this space, this set, you can say. If we take any two elements, okay, for any x and y belongs to Rn, we know that if x belongs to Rn and y belongs to Rn, then we can write x in this form, x1, x2, so on, xn, and y, how can we write it? y1, y2, so on, yn. Okay. And now, how do we add them? X plus y is basically, we add the respective elements of x1 and y. So x and y. The question in the chat window? Can you see what I'm writing clearly? Sort of, not really. There's a light issue here. It's a contrasting board. What can I do? Let me turn on. सर हुआ क्या, इतना अच्छा हमारा सारा सिस्टम चल रहा था स्टार्ट में, कमरा भी अपना था, क्लास भी टाइम पे होती थी, एकदम से सारा फ्लिप हो गया. What is this? So लाइट चली गई. How do we add two elements or two vectors or 2 points? We say them generally vectors of this space. Okay? We can also say them points or elements of this Rn. Now, if we want to add two elements or two vectors in Rn, how do we add them? We add the respective components, and these individually, these are basically called components. So we add them respectively. The first component in first, second, and this is how we add vectors in Rn. This is the standard addition, standard definition of addition in Rn. Similarly, we can define scalar multiplication. How do we define scalar multiplication in this set? Okay. In order to define scalar multiplication, we need a scalar as well. Okay. So we always choose scalars from the real numbers in this course. We can choose scalars from the complex numbers, but that is not in your syllabus. So for all scalars, or you can say for any scalar, scalar can be denoted by k belongs to R. Now, notice that all the scalars k, they belongs to some real numbers. And we choose vectors from Rn, okay, any element of Rn. Then how do we multiply this vector by this scalar? We always choose scalars from real numbers. Now, what is the scalar multiplication? K times x is what? K times x, x is what? X is basically a vector which can be written in this form. Then we multiply the scalar with each component of that vector. Kx1, kx2, so on, kxn. So this is how we define addition, and
And this is how we define scalar multiplication in this set Rn. So is there a question in the chat window? So did you sir teach anything? You're talking to each other. Okay. Now, can use below it. And not moving. So I have to erase it. So this is how we define Euclidean space, and this is how we add any two elements of Rn, and this is how we multiply a scalar with some factor. If you have any question, you can ask me. Just look at this. These basic definitions. This is called basically standard addition and scalar multiplication. Okay, this we call it standard addition and scalar multiplication. This is how we usually add elements of R and scalar. Now, Euclidean vector spaces. What is this? We'll discuss this later on, but first we need to discuss what kind of properties these elements of Rn they satisfy. For example, the first property which we need to discuss is first property is called Chlorine law or Chlorine property. You can say anything. Chlorine axiom or whatever. In different books, they say it differently. Chlorine law, Chlorine property, Chlorine axiom, or whatever. What is this Chlorine axiom? For any x, y belongs to Rn, how can we write it more precisely? For any को हम mathematics में यूँ लिखते हैं. For all या for n. So next time I'm going to write it in this way. I'm not gonna write for n. For all or for any x, y belongs to Rn. X plus y belongs to Rn. This is the first property which we need to discuss for the elements of Rn. Okay. Can we prove this property? Or how can we prove this property? In order to prove this property, what we do, we choose any two elements of Rn, any two vectors of Rn, and we try to prove that their sum is also in Rn. Their sum also belongs to Rn. This is how we can prove it. So if x and y belongs to Rn, then x can be written in this way: x1, x2, so on, xn, and y is y2, so on, yn. Now, consider what we have to prove. We have to prove that to prove x plus y belongs to Rn. This is what we have to prove. Okay. In order to prove it, what we do, we consider x plus y. Okay. What is x plus y? It is x1 plus y1, x2 plus y2. According to that definition we have defined earlier, how to add two vectors, and so on, xn plus yn. Okay. Now, can anyone tell me whether this vector belongs to Rn or not? It does. Why it belongs to Rn? So because all of its components are the sum of two rational numbers that are in the real numbers that are in the Euclidean space. Yes. Now, what is the definition of Rn? Rn की definition क्या है? If it contains anything of this kind,
such that all the components x1, x2, so on, xn, they are real numbers. Forget about it. Now look at this. Now individually x1, x2, xn, they are all real numbers. Individually y1, y2, yn, they are all real numbers. Sum of real number is a real number. So x1 plus y1 and x2 plus y2, they are all real numbers. So they must belong to R. This belongs to R, okay, because it has n components and all the components are real numbers. So this is the reason behind it. Why this belongs to Rn? Because all these, you can say that x1 plus y1, x2 plus y2, and so on. They all belongs to R. You have the sum of real numbers is a real number. This is called Chlorine Property. If you have any question, you can ask me. Otherwise, I'm going to write the next property. Chlorine Property. The next property is Commutative Property. Under addition. All these properties tell me. Commutative law or commutative property, you can say anything. What is commutative law? For all x, y belongs to Rn, implies x plus y is equal to y plus x. Means we can interchange the order of elements in addition. Okay? Either 2 plus 3 or 3 plus 2. The answer is same. So this is called commutative property. Now, if you want to prove this property, what you have to do, you have to start with the left-hand side, consider the left-hand side, and you try to reach at the right-hand side. Now, if you start with the left-hand side, you can write x plus y is equal to this. Now, individually, this is what? This is a real number. And commutative property holds in R. So we can write y1 plus x1, y2 plus x2, so on, yn plus xn. Why is this is so? Because R, because real numbers satisfy commutative property. You can say that. Because the elements of R satisfy commutative property, commutative law. Okay, so that's why we can interchange them. If we can interchange them, then after this, you can split them into two separate vectors. You can write y1, y2, so on, yn first, and then x2, so x1, x2, so on, xn. So which is equal to y bar plus x bar, which is the right hand side. So this is how you can prove it by using a very small logic, you can say, of the real numbers. This is the reason why we can commutate these individual numbers. You have to give a reason of everything, why you are basically replacing the place of these two numbers, why you are commutating. Basically the commutative property. The next is associative property. ये हमारी सिर्फ नॉलेज के लिए है या हमसे पूछा भी जाएगा कि इन प्रॉपर्टीज को प्रूव करो? Yes, you would definitely be asked to prove these properties for some other sets, for Euclidean spaces, for I'll tell you later. I'll give you a couple of more examples of for the different sets. Then you have to prove whether this set is a vector space or not. Sorry, whether the elements of this set satisfy these properties or not. We'll discuss later on vector space in detail with some other examples, and then you have to prove all these properties. So look at them critically, how we can prove them. The third property or the law is associative law. Associative law. Associative law is what in Rn, if we choose for any
any three elements of Rn, okay, then associative law is x plus y plus z is equal to x plus y plus z. ठीक है, अब आपने तीन नंबर्स को ऐड करना है. You always add two numbers first, and then you add the third number in the resultant of sum of those two numbers. So what is associative property? It says that either you add first y and z, and then you add x in the sum of y and z, or you add first x and y, and then you can add z in the resultant of in the sum of x and y. It doesn't change anything. This is what the associative property tells us. Okay. तो तीन में से कोई से दो नंबर पहले आप ऐड कर दें, बाद में तीसरा ऐड कर दें, तो उससे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, आंसर सेम आएगा. ठीक है. So this is what we call associative property. Okay. I hope you can. Left or right, the same चीज नहीं लिखी हुई. Never mind. ठीक. कुछ नहीं. So this is what associative property is. You try to prove it. You start with the left-hand side. Okay. You consider x. Consider left-hand side x plus y plus z. Okay. Now what should be x? X is x1, so on xn plus, and you take some other bracket. Here you write y. Here you write z. Okay. Then you first add these two numbers and then resulting number, then you can interchange the bracket, and then you can bring the right hand side easily. I hope you can do it. And what is the reason of interchanging the bracket here is again the same reason, because the elements x1, x2, and x1, y1, z1, they are real numbers, and in real numbers, associative property is satisfied. So we can interchange their brackets. Third, next property is identity element. Identity element. So identity element should be there in Rn. Okay. We check in this property that whether Rn contains or has identity element. With respect to addition. With respect to addition, because we are discussing all the properties with respect to addition. So this is basically identity element, you can say, with respect to addition. Now, does Rn contains any such element which if we add into some other elements? For example, is there any element in Rn such that that element plus any element gives us the same element? Is there any such element in Rn? Sir, zero vector. Zero vector. So this zero vector is what? It is identity element under addition. Because zero vector belongs to Rn. And what is this zero vector is in fact? 0, 0, so on, 0 n times. This belongs to Rn, obviously. So this is identity element under addition in Rn. So we have to check whether the given set has identity element in it or not. Okay. And what is the definition of identity element? We usually denote identity element by E bar. Okay. And here in Rn, it is basically 0 bar. Okay. You can say that this is your E bar is 0 bar in Rn. Okay. Identity element को हम E bar से denote करते हैं.
And the definition of identity element is that if we add this identity element into some other element, the resultant is the same element. Okay, this is what the definition of identity is. You have to remember, keep this in mind. Either we add identity from the left-hand side to this element, we get the same element, or we can say that we add the identity from the right-hand side to this element, we should get the same element in both cases. Okay, in this case as well. So this is basically the definition of identity element. In general, we write that x plus e is equal to e plus x is equal to x. Okay. So there exists an identity element in Rn. This is what we have to check in this property. The next property is the fifth one is inverse elements. Inverse elements. In this property, we check whether every element has additive inverse in Rn or not, okay? or in any other set. For example, for all x belongs to Rn, is there any other element there such that the resultant we get is identity element? Means 0, right? Negative x Minus bar. x bar. Minus x bar. Good. So this one is what? Is the additive inverse of x bar. Okay. So we have written this, but we have to check it. हम क्या कहेंगे? For all x belongs to Rn, there exists minus x belongs to Rn such that x plus minus x is equal to minus x plus x is equal to identity element. This is how we check the inverse elements in any set. And this property is called inverse elements. So now, if you think in Rn, do you think that every element in Rn has additive inverse in Rn? Yes, sir. I mean, apart from 0, no? 0 का सारों में additive होना 0 ही होगा. 0 होगा, बाकी सारों का तो होगा. Definitely होगा. You can write any element as x bar. For example, if you choose r cube, ठीक है? R cube में आप कोई भी element लेते हैं 1, 2, 15 में. तो minus x क्या होगा? Minus 1, minus 2, minus 15. So these both belongs to R cube. Obviously they belong. So we can see that every element in Rn, for every element in Rn, there exists a negative of that element, which is also in Rn, such that if we add these two elements, x and minus x, or minus x and x, we get the 0 vector in Rn. So Rn में inverses exist करती हैं. Next, sixth Sir. problem. जी. कुछ इस irrelevant question है अभी, वो बाद में जब क्लास होगी मैं तब पूछूंगा. चलिए कोई बात नहीं, आप पूछ लें. No problem. सर मैंने पूछा था कि दो चीजें. पहली बात है हमारा अगला क्विज कब है, और दूसरी बात है हमारा मिड कब है. Quiz next जो है वो next class में होगा. नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट वीक. Next week. ठीक है. और mid, which week is this? We are in 6th week, I think. Yes sir, वीक 6th है या 7th है. The 6th. 6th. So I'll take quiz in 8th week. Next week में आपका quiz होगा, उससे अगले week में आपका mid होगा. ठीक है. Now this is the 5. We have already discussed the 5 properties of elements of Rn. These 5 properties are basically with respect to addition. There are 2 kind of properties. As you know that there are 2 operations. One which is defined on Rn, addition and
The second one is scalar multiplication. ये है ना दो operations हमने basic operations define किए Rn. With respect to addition, 5 properties हैं. और with respect to scalar multiplication, 5 properties. So पहली जो हमने properties define की 5, वो 5 properties जो हैं वो कौन सी हैं? Clear law, commutative law, associative law, inverse element, identity element, inverse element. ये 5 properties है with respect to sorry addition. The next 5 properties which we are going to discuss, they are basically with respect to scalar multiplication. Okay. Now the 6th property is basically with respect to the scalar multiplication. Remember it. 6th property is basically what? For any scalar, for all k belongs to R, or for any k belongs to R, and x belongs to Rn, implies kx bar belongs to Rn. This is basically again a clear law with respect to scalar multiplication. पहले हमने clear law with respect to addition देखा था कि अगर आपके पास दो numbers हैं तो उनका sum भी Rn को belong करता है. अब scalar multiplication का clear law क्या है? It is basically if we have a scalar and we have a vector, if we multiply them, their product should belongs to Rn as well. Okay, this is called scalar multiplication. Clear law with respect to scalar multiplication. The next, if you have any question, you can ask me. Next property is for all k belongs to R, and now we are taking two vectors, x and y belongs to Rn. K times x plus y is equal to k times x plus k times y. Not x, k times y. This is kind of distributive law, but it is not exactly distributive law is, because in distributive law all the 3 elements should be same. But it is basically a distributive law with respect to scalar multiplication. You might have seen this kind of property, or you might have already studied distributive laws. But distributive laws, remember that for any set, for any elements of a set, the elements should be same. But this is basically a kind of distributive law with respect to scalar multiplication. We can prove it. In order to prove it, what we need, let's consider the left-hand side. This one. Okay. Now, this left-hand side has 2 elements which belongs to Rn, and 1 element which is a scalar. So how can we write it? We can say that x plus y jo hoga wo kya hoga? It is basically x1 plus y1, x2 plus y2, and so on, xn plus yn. Okay. Now we can multiply k inside with each component of this vector, which can be written as k times x1 plus y1, k times x2 plus y2, and so on, k times xn plus y. Now, we can separate them. We can multiply this k with inside with x1 and y1. Why can't we multiply it? Because all these 3 are real numbers individually. Okay, x1, y1 they're all real numbers. They're not vectors now anymore. For real numbers, we can multiply k inside. So we can write it kx1 plus y1, okay, kx2 plus ky2, and so on, kxn plus kyn. Okay. Now, further, we can split them up into 2 vectors. Can we split them? Can we write them in this way? Kx1, kx2, so on, kxn plus ky1, ky2, so on, kyn.
Okay, we can write it in this way. And then we can take common k and write here x plus k y back. Okay, which is what? Which is the right hand side which was required. This one, we have to bring this side, so which is equal to this. So left, we started with the left hand side and we reached at the right hand side. So this is how we can prove this property and all other subsequent properties which I'm going to define here. If you have any question, you can ask. So why we are doing this, all this thing? I told you in the previous lecture. Someone, can you tell me? What is? सर क्लास की स्ट्रेंथ ही इतनी कम है जो पीछे पिछले किसी ने सुना भी होगा वैसे वो आया नहीं होगा कोई बात नहीं। सर लीनियर इक्वेशंस को हम एनालाइज करने के लिए सब कुछ Yes, करते हैं। we are going to discuss the solutions of linear systems. If we have infinite many solutions of a linear system, the solutions are basically vectors. Okay. Now, in order to discuss the solutions of linear systems, which are vectors, we need to see whether these vectors they satisfy certain properties or not. Okay. So that's why we are trying to check these properties on the vectors in Rn. Because Rn is what? Rn is a space which contains vectors, and the solution of linear systems are also vectors. What we are trying to discuss here, whether if we add two solutions of linear system, the resulting vector is also a solution or not. Okay. Means clear property kya hame, what does that clear property tells us? For a solution of a linear system, if we choose two solutions, if we add them, whether the new vector which we obtain that belongs to that space or space of solutions or not. Means if we add two solutions, the third vector which we obtain, is that vector is again a solution of that linear systems or not? ठीक है? और कोई से दो solutions हैं, उनको हम कैसे ऐड करें? x y कर लें ऐड या y x कर लें, उससे कोई इफेक्ट तो नहीं पड़ेगा. एसोसिएटिव ला, तीन solutions है आपके पास, अगर तीनों को आपने ऐड करना है तो कोई से दो solutions को पहले ऐड कर दें तो कोई इफेक्ट तो नहीं पड़ेगा. So we are trying to discuss whether the solutions of those linear systems they satisfy certain properties or not. Okay, that's why we are defining these properties. Similarly, scalar multiplication में कि अगर हम किसी एक स्केलर को किसी एक solution को स्केलर से मल्टीप्लाई करें तो उससे क्या इफेक्ट पड़ेगा? स्केलर से मल्टीप्लाई करेंगे तो नया जो वेक्टर आएगा वो भी सॉल्यूशन होगा या नहीं होगा. So all these kind of things we are trying to discuss all these things with the help of these properties. Later on, you will see that all these properties will make up vector spaces. Okay, we will discuss this. कौन सी property हम prove करने लगे थे? 6th, 7th. Seventh property is that for any two scalars C and D belongs to R, any two scalars, and one vector x belongs to Rn. Is this possible? C times D times x is equal to C times D times x. Yes. Now this is property for this scalar multiplication. What does this property tells us? If we multiply a vector with a scalar, okay, we get another vector, and then we multiply that whole vector with another scalar. Okay. Is the same as if we multiply two scalars first and then multiply it with a vector. So this is what we are going to check here. मतलब आप एक solution को एक constant से multiply करें, फिर दूसरे constant से multiply करें बारी बारी, या आप पहले constants को sides पे multiply कर दें और फिर
आप वेक्टर को मल्टीप्लाई करें. So this is what this property tells us. So I hope you can prove this property similarly as we had proved the previous property. Try to prove it yourself. The next property, eighth one, is for all, again, two scalars C, D belongs to R and X belongs to R. Is this possible? C plus D times X is equal to C times X plus D times X. I think this one is 7th and this one is 8th. I have interchanged. So try to prove this property as well as we have proved the 6th one. Okay. What is the difference between 6 and 8? In 6 we have two vectors, one scalar. Here we have two scalars and one vector. So this is the difference. Okay. Remember this difference because C, D are scalars now and X is a vector. Can we? What does this property tells us? That if we have two scalars, we sum them first and then multiply with X, or we multiply C with X and D with X and then we take their sum. This thing is same. Okay. So you have to prove this. The ninth property is, what is the ninth property? पहली हमने 6 वाली डिफाइन की थी क्लोजर प्रॉपर्टी. उसके बाद हमने डिफाइन की थी सर ये 8th और 9th है, ये 10th रहती है. ये हाँ ये 8th सर और हमने 9th. पहले 2 डिफाइन कर ली थी, ये 8th और 9th है. ये 8th है, ये वाली 9th है और लास्ट अब एक रह गई है. मैं भी सोच रहा हूँ कि मिस कौन सी है. ये 9th है. Okay? और यहाँ पे 10th प्रॉपर्टी आएगी which is 1 dot x is equal to x. It is basically a multiplicative identity with respect to scalar multiplication, that if we multiply any vector with 1, we get the same vector. This is what this property tells us. It's basically a special case of the first scalar multiplication. लेकिन उसमें क्या था कि हम चेक करते थे k times x belongs to Rn. यहाँ पे हमने क्या चेक करना है? If we put k is equal to 1 and we multiply 1 with x, we get x. Okay. If we get x, then obviously, as we are choosing x from what x belongs to Rn, तो अगर ये product x के equal है, तो ये product definitely Rn को belong करेगा. लेकिन what we are trying to check here, whether if we multiply 1 with any vector, we get the same. So these are 10 properties which we need to verify for the vectors in Rn. If this Rn satisfies all these properties, then we call it Euclidean vector space. Okay. If Rn and we say V, if V is equal to Rn, together with basic operations of addition, basic operations of addition and scalar multiplication, because addition and scalar multiplication, if V is equal V, हमने इसको V क्यों कहा? क्योंकि V stands for vector space. Vector space V से start होता है, इसलिए हमने इसको V किया. If V is equal to Rn, together with basic operations of addition and scalar multiplication, satisfy all the 10 properties or laws or axioms properties, then we say that Rn is a vector space. And because we say that Rn is a Euclidean space, so that is why we call it Euclidean vector space. Okay? So whenever
in subsequent lectures, when I say Euclidean vector space, you should understand that what is Euclidean vector space? It is Rn. If I say that Euclidean vector space of dimension 3, because this n is the dimension of this vector. If n is 2, then we have two-dimensional space, two-dimensional vector space. Okay. If n is 3, then we have a space. Okay. If n is 4, then we have a four-dimensional space. So these are all Euclidean spaces of different dimensions, 1, 2, 3, 4, and so on. Even if R is 1, even if R is 1, then R1 means this is a set of real numbers. It is again a Euclidean vector space. Okay. Euclidean vector space, or simply a vector space. If you have any question, you can ask me. Excuse me, sir. ये जो ninth property है, इसको distributive property कहते हैं या? This one is a kind of distributive, but it is not exactly the distributive property. You can say that it is right distributive property with respect to scalar multiplication. But the original, which you have already discussed, distributive property, in that property, all the nature of elements should be same. Okay? Oh, okay, sir. यहाँ पे x अगर वेक्टर है तो ये भी वेक्टर्स होने चाहिए डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी के लिए जो स्टैंडर्ड डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी है. But this is, you can say, distributive property with respect to scalar multiplication, because here we have scalars and here we have vectors. Okay. Okay, sir. Okay. So now let me define some other. Operations on Rn, addition and scalar multiplication, they are standard operations. We can change them. For example, Rn पे हमने addition कैसे define की थी? Rn के दो vectors को हमने कैसे add किया था? x1 plus y1, x2 plus y2, so on xn plus y. And scalar multiplication कैसे की थी हमने? kx is kx1, kx2, so on kxn. Now, we can change the definition of this addition and scalar multiplication depending on our practical application. For example, if I say that this is called standard addition and scalar multiplication. Again, I can change these definitions according to my practical or the situation I'm working in. I can say that x plus y is nothing but x1 plus y1 plus 2, x2 plus y2 plus 2, and so on, xn plus yn plus 2. Okay. Now, I have changed its definition. Only the definition of addition. Okay. मैं क्या कर रहा हूँ कि अगर आप दो vectors हैं x और y, okay, where x is what? X is the same vector x1 by x1, x1, x2, x, so on xn, and y is a vector y1, y2, so on yn. Okay. Now, when I add these two vectors, the addition is defined in this way. That we add the respective components of these vectors as well as we add 2 in them. Okay. So I have changed the definition. Now, can I prove all those properties again using this definition of addition? So what I have to do here, I have to prove all those properties. Now, I'm going to change Rn. I'm going to change the addition in Rn in this way and scalar multiplication in the same way. Okay. अगर scalar multiplication change नहीं हुआ तो 5 property अगर ये satisfy कर रहा है पहले scalar multiplication वाली 5 से 10 तक तो वो obviously satisfy करेगा. Effect किस पे पड़ेगा?
इसकी डेफिनेशन चेंज हुई है एडिशन की, तो पहली 5 प्रॉपर्टीज पे इफेक्ट पड़ना चाहिए ऑब्वियसली। तो हम पहली 5 प्रॉपर्टीज को देखते हैं कि वो इसमें प्रूव होती हैं या नहीं। क्लोयर लॉ अगर आप कोई से 2 एलिमेंट लें उसका सम लें तो ये आएगा। अब ये Rn को बिलोंग करता है या नहीं? Does it belong to Rn? Yes, sir. Yes. Because x1 y1 Rn को बिलोंग करते हैं, R1 R को x1 y1 भी R को बिलोंग करेगा, x1 plus y1 plus 2 भी R को बिलोंग करेगा। Means all these components they belongs to Rn. Now let's check the commutative property. Commutative property भी होल्ड करेगी। आप इसको इंटरचेंज कर दें x1 और y1 को, और फिर आप स्प्लिट अप करेंगे तो 2 गायब हो जाएगा। क्यों? क्योंकि ऐड करते हुए 2 नहीं था ना, तो स्प्लिट करते हुए 2 गायब हो जाएगा। यहाँ पे जब आपने इंडिविजुअली ऐड किया था, ऐड करने से 2 आता है, जब स्प्लिट अप करेंगे तो 2 गायब हो जाएगा। तो फिर ये कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी होल्ड करेगी होल्ड। यस, एसोसिएटिव लॉ होल्ड करेगा या नहीं? अब आपने 3 नंबर्स को ऐड करना। यस सर। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी भी होल्ड करेगी क्योंकि 3 नंबर्स ऐड होंगे तो 4 हो जाएंगे। ठीक है, उसको स्प्लिट करते वक्त 2 और 2 हम लिख लेंगे। माइक ऑन है किसी का, माइक ऑफ कर लेंगे। नाउ आइडेंटिटी एलिमेंट, इस सिचुएशन के मुताबिक आइडेंटिटी एलिमेंट क्या हो? आपके पास x क्या है, x1 x2 so on xn। अब इसमें हम क्या ऐड करें कि आपके पास आंसर आइडेंटिटी, सॉरी आंसर वही रहे। ठीक है, मींस x में आप क्या ऐड करें कि x ही रहे? नल वेक्टर सर, नल वेक्टर सर, आई मीन जीरो वेक्टर ऐड करोगे तो क्या हो जाएगा? नल वेक्टर ऐड करेंगे तो क्या होगा? x1 plus 0 plus 2 x2 plus 2 and so on xn plus 0 plus 2। ये क्या आता है? This is not equal to x, तो x की इक्वल नहीं है। नल वेक्टर यहाँ पे क्या होगा? माइक ऑन है किसी का? whose mic is on kindly? सर वैसे आपने फर्स्ट प्रॉपर्टी अज्यूम की है या स्टेट की है? कौन सी? x plus y एडिशन की प्रॉपर्टी इनिशियल। ये वाली? ये? यस सर। इसकी डेफिनेशन को चेंज कर दिया है कि अब जो है ना एडिशन इस तरह होगी। पहले तो स्टैंडर्ड एडिशन थी ना, एडिशन की डेफिनेशन को हम चेंज कर सकते हैं। इट कैन बी चेंज्ड। अच्छा, अब क्या कौन सा वेक्टर हम इसमें ऐड करें x में कि x ही रहे? Anyone can tell me? Sir, -2. Yes. So here identity vector is what? Identity vector is what? -2, so on, -2. है या नहीं? सर आई डोंट गेट के आप you got this point? पूछा क्या था? और नो सर आई डोंट। देखिए सर आपने हमने एडिशन क्या ऐड करना है कि x plus कौन सा वेक्टर आना चाहिए? कि आपका x ही रहे, आपका आंसर x ही रहे।
अब देखो स्टैंडर्ड एडिशन जो है वो हमने चेंज कर दिया डेफिनेशन में, +2 भी हमने तरफ से लगा दिया। तो यहाँ पे क्या नंबर हम ऐड करें, -2 करेंगे तो आपके पास रिजल्टिंग नंबर क्या आएगा, यहाँ पे सिर्फ x1 x2 so on xn आएगा ना, which is x। So identity here, identity is basically denoted by E letter, I told you. And E identity is what? This vector, -2, -2, so on, -2. What is the inverse element in this thing? किसी भी वेक्टर का इन्वर्स क्या होगा? सर उसका नेगेटिव वेक्टर होता है, इस केस में आई गेस उसमें -2 भी डालना पड़ेगा। आंसर क्या आना चाहिए? आइडेंटिटी आना चाहिए। तो आंसर देखें, x में हम क्या ऐड करें, यहाँ पे x में हम क्या ऐड करें कि आंसर आपका E वेक्टर आए, which is -2 -2 so on -2। Sir, a negative x vector and a -4 vector. Yes. So negative x vector, where negative x vector is what? Negative x vector is what? It is negative x1, -4, negative x2, -4, and so on, negative xn, -4. Is this so? चलिए इस पे थोड़ा सा सोचें। ये आपकी पहले 5 प्रॉपर्टीज प्रूव होगी, ठीक है। सो इफ वी चेंज द डेफिनेशन ऑफ the addition in Rn, our properties will be changed, or we have to prove them again. Again, in a practical sense, you can say that अगर आपके पास कोई 2 सिग्नल्स आ रहे हैं या 2 वेव्स आ रही हैं, ठीक है, उनकी डिफरेंट फ्रीक्वेंसी है, वो 2 वेव्स मिलके अब जब एक तीसरी वेव बना रही हैं, तो तीसरी वेव जो होगी उसकी फ्रीक्वेंसी उन दोनों के वेव से डिफरेंट हो सकती है। मतलब पहली वेव की अगर फ्रीक्वेंसी 10 है, दूसरी की 20 है, तो तीसरी वेव जो वो दोनों मिला के बना रही हैं, वो जो तीसरी वेव है उसकी फ्रीक्वेंसी जरूरी नहीं है कि 30 हो, 25 हो सकती है, मे बी 40 हो जाए। तो आपकी जो यूजुअल एडिशन है वो सिर्फ नंबर्स में है। इन सम अदर फिजिकल फिनोमेना the addition of 2 things may not be as we expect them. So this is the reason, मतलब हम कहते हैं कि दो वेव्स आ रही हैं यहाँ पे, ठीक है, एक की फ्रीक्वेंसी 10 है, दूसरे की फ्रीक्वेंसी 20 है, ठीक है, they are meeting at a point and making another wave, and the frequency of this is what? 35. तो इसमें क्या होगा कि आपने 10 और 20 को ऐड किया तो क्या आया? 30। हालांकि इस वेव की फ्रीक्वेंसी क्या होनी चाहिए? 30 होनी चाहिए, लेकिन क्या है? 35 है। तो यहाँ पे बेसिकली क्या है? 30 + 5। तो जितनी भी इस तरह की वेव्स आएंगी, 2 वेव्स, उनकी फ्रीक्वेंसी में क्या ऐड हो जाएगा? 5 ऐड हो जाएगा। उनकी फ्रीक्वेंसी जो है ना, उनकी जितनी भी फ्रीक्वेंसीज होंगी उनका सम प्लस उसमें 5 ऐड हो जाए। जो नई वेव बनेगी उसकी फ्रीक्वेंसी जो है वो प्रीवियस वेव्स की फ्रीक्वेंसी का सम +5। तो ऐसा पॉसिबल है ना। सो दिस इज व्हाई आई एम सेइंग यू कि अब पहले जो वेक्टर्स हम ऐड करते हैं स्टैंडर्ड एडिशन में, उसमें तो हर कंपोनेंट ऐड हो जाता है, लेकिन आई कैन चेंज द डेफिनेशन ऑफ एडिशन एज वेल। फॉर एग्जांपल, ये आपके पास एक वेव है, ये दूसरी वेव है, इनकी फ्रीक्वेंसी हम ऐड कर रहे हैं, तो जो तीसरी वेव बनेगी, दिस इज अनदर सम अदर वेव, तो तीसरी वेव में फ्रीक्वेंसी में जो पहले जो वेव्स हैं उनकी फ्रीक्वेंसीज को ऐड करेंगे, +5 कर देंगे, तो सारों में क्या हो जाएगा? +5 हो जाएगा। सो इट इज पॉसिबल, दीज ऑपरेशंस ऑफ एडिशन एंड स्केलर मल्टीप्लिकेशन,
you define them depending on your application you are working in. थोड़ा बहुत समझ आया है नहीं? Anyone? Yes sir, so like applied mathematics में इस तरह हो सकता है. हाँ, it is possible. Similarly, आप देखें जब आपके पास लाइट रेज आती हैं सूरज से, आप उसके दरमियान में कोई मीडियम रख दें तो कुछ लाइट्स जो हैं वो उधर डाइवर्ट कर जाती हैं, कुछ सीधी गुजर जाती हैं, कुछ वापस चली जाती हैं. ऐसा होता है ना? तो मैं कहता हूं कि लाइट जो है उसके कलर्स को ये वेक्टर रिप्रेजेंट करता है. ठीक है, कलर मसलन रेड है, ब्लू है, एंड मेनी अदर कलर्स. जब ये किसी एक खास मीडियम से पास करती है, तो जरूरी नहीं है कि सारे के सारे कलर्स जो हैं वो पास कर दें. कुछ ऐसे कलर्स होंगे जो पास नहीं करेंगे. आफ्टर पासिंग थ्रू दिस मीडियम वी गेट दैट आपके पास रेड कलर ठीक है रहा, ब्लू कलर खत्म हो गया. ठीक है, ब्लू कलर खत्म हो गया, उसकी जगह कोई और कलर आ गया. ठीक है, वो ब्लू जो है वो थोड़ा सा ब्लू प्लस में भी पिंक हो गया. ठीक है, यहाँ पे कलर चेंज हो गया. अब इसकी इनपुट एक्स वेक्टर है, आउटपुट जो है वो समथिंग डिफरेंट वाई वेक्टर है. तो in applied mathematics, in applications of physics and mathematics, these vectors can change their nature after certain event. So हम जो usual addition and multiplication है वो तो standard है, लेकिन according to our applications we can change these addition and scalar multiplications. एक्सक्यूज मी सर. जी सर आप कंप्लीट कर लें बात अपनी. हाँ बोले, मैंने कर लिया. सर आपने x प्लस वाई वेक्टर को ऐड किया तो वो एक कंबाइंड वेक्टर बन गया. हाँ. तो सर आपने जब लेकिन इनवर्स जब फाइंड किया वो खाली x का क्यों किया, वो कंबाइंड वेक्टर का क्यों नहीं आपने इनवर्स फाइंड किया? देखिए आपने ऐड करना है ना, सम लेना है ना. जब आपने x लिया, इसमें हम कौन सा वेक्टर ऐड करें तो आपके पास आंसर आइडेंटिटी वेक्टर है. तो आपने सम लेना है ना, तो सम में क्या करें हम? ठीक है, ये इसके कंपोनेंट क्या होंगे? x1 x2 so on xn. ठीक है, अब इसमें इसके कंपोनेंट्स क्या होंगे आपने डिफाइन करना ना. यस सर. वो मैं कह रहा हूं कि -x1 -4 + 2 ये उसका कंपोनेंट होना चाहिए. So that, क्योंकि अब तो ये रियल नंबर हो गए, अब इनको ऐड करेंगे तो आंसर क्या आना चाहिए? -2. तो पहले का -2 आंसर आ रहा है ना. x1 कैंसिल हो गया, -4 + 2 is -2. तो सारों के साथ अगर यही ट्रीटमेंट होगी तो सारे -2 आएंगे, which is what it is identity. I hope you get it. Yes sir. अब देखिए जनरल वेक्टर स्पेसेस में अगर हम बात करें इसी चीज की सारी प्रॉपर्टीज की, तो ये तो हमने अभी यूक्लिडियन वेक्टर स्पेस डिफाइन किया. मसलन मैं एडिशन को या आप स्केलर मल्टीप्लिकेशन को चेंज करता हूं. एडिशन जो है वो सेम है. ठीक है, स्केलर मल्टीप्लिकेशन को मैं चेंज कर देता हूं कि कोई आप स्केलर लें k टाइम्स x, तो ये क्या है k टाइम्स x1 x2 so on xn. एंड मैं इसको डिफाइन कर रहा हूं कि ये जो है वो k x1 है 0 0 so on सारे 0. जैसे कि मैंने लाइट रे की एग्जांपल दी थी, आप कोई एक ऐसा मीडियम रखें उस लाइट के सामने कि सिर्फ एक कलर पास करे, बाकी सारे 0 हो जाए, बाकी कोई कलर पास ना करे, बाकी सारे रिफ्लेक्ट हो जाए. तो उसका मतलब क्या होगा? या आप कोई ऑपरेशन है, आई एम जस्ट गिविंग यू एन एग्जांपल. तो जब k ऑपरेट होगा उस पे, मीडियम ऑपरेट होगा उस लाइट रे पे, तो उसका सिर्फ एक कलर पास होगा, बाकी कोई भी नहीं होगा, बाकी 0 हो जाएगा. सो इस तरह के ऑपरेशंस जो हैं वो अगर रियल लाइफ एप्लीकेशंस में अगर आपने लगाने हैं, दिस इज नॉट द एग्जैक्ट एग्जांपल ऑफ दिस थिंग, बट आई एम जस्ट ट्राइंग टू एक्सप्लेन यू कि एडिशन एंड स्केलर मल्टीप्लिकेशन को अकॉर्डिंग टू योर रियल लाइफ प्रॉब्लम and real life application we can modify them. ठीक है,
डिपेंडिंग ऑन द सिचुएशन। तो मैं कह रहा हूं कि स्केलर मल्टीप्लिकेशन ऐसे होती है, या मैं इसको कुछ और कह देता हूं, x पावर x1 पावर k हो जाती। तो मींस आप किसी एक कंपोनेंट को k से मल्टीप्लाई करें, बाकी सारे कंपोनेंट 0 हो जाएं, पहला कंपोनेंट जो है वो उसकी पावर में चला जाए k। So this is another kind of operation which I can define as a scalar multiplication. अब इस ऑपरेशन में के तहत हम देखेंगे कि वाकई Rn जो है वो वेक्टर स्पेस है या नहीं। मसलन R2 में देखिए, स्केलर मल्टीप्लिकेशन में डिफाइन कर रहा हूँ R2 में k times x1 x2 is equal to k kx1 plus maybe 3 and kx2 plus 5. इस तरह भी स्केलर मल्टीप्लिकेशन हो सकती है। आप डिपेंडिंग ऑन योर सिचुएशन और एप्लीकेशन यू कैन डिफाइन मल्टीप्लिकेशन इन दिस वे। इस तरह आप डिफाइन कर लें, या आप इसको यू कर लें kx1 x2 0, ऐसे भी कर सकते हैं। So it depends कि आपकी क्या सिचुएशन है। अब हम अगर हमारे पास ये स्केलर मल्टीप्लिकेशन है या इस तरह डिफाइन हुई है, तो इसको प्रूव करने के लिए हम क्या करेंगे? बेसिकली एडिशन तो वही है, पहली 5 प्रॉपर्टी पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, सेकंड 5 प्रॉपर्टीज पे शायद इफेक्ट पड़े, एंड वी आर गोइंग टू ट्राइंग टू प्रूव दैट। पहली प्रॉपर्टी क्या है? क्लोजर लॉ। k को x से मल्टीप्लाई करें तो आपके पास ये आ जाता है, ये Rn को बिलोंग करेगा या नहीं करेगा? करेगा ना, क्योंकि ये एक रियल नंबर आएगा, रियल नंबर की पावर ले लें, कोई भी रियल नंबर रहेगा, ये सारे जीरोस हैं, ये Rn को बिलोंग करेंगे, इट डजंट मैटर। दूसरी प्रॉपर्टी क्या थी कि आप c टाइम्स x प्लस y इट इज इक्वल टू c टाइम्स x प्लस c टाइम्स y। ये कैसे प्रूफ करेंगे? लेफ्ट हैंड साइड से अगर हम शुरू करें, लेफ्ट हैंड साइड, तो c times x plus y is what? c पहले आप इन दोनों को ऐड करेंगे, x1 plus y1, x2 plus y2 plus so on xn plus yn। एडिशन में कोई इफेक्ट नहीं है, उसी तरह ही होगी। लेकिन जब आप स्केलर मल्टीप्लिकेशन इसकी करेंगे तो ये क्या आ जाएगा? x1 plus y1 पावर c, फिर बाकी क्या हो जाएंगे? सारे के सारे 0, so on. Now, can we split this into cx plus dy? Because ये x1 plus y1 पावर c है, तो इसका तो कोई हल नहीं, हम इसको स्प्लिट नहीं कर सकते, सिंप्लीफाई नहीं कर सकते, तो we cannot prove that this is equal to this. It means this property is not satisfied for this scalar multiplication. Can you prove that this can be split into cx plus dy? Sorry, cx plus c d, no, cx plus cy, not d, cx plus cy. So it is not possible that we can split this into this, or even you can take the right hand side and you solve it. What you will get, you cannot get this thing. So left hand side cannot be equal to right hand side, so this property is not satisfied. If at least one of these 10 properties is not satisfied for a set, for the elements of that set, we say that that set is not a vector space. Okay? Now, under this addition and scalar multiplication, we say that Rn is not a vector space. Okay? Rn is not a vector space. And we call it basically Euclidean vector space in general. Rn is not a vector space under this addition and scalar multiplication. So this operation is not allowed in Rn with respect to this scalar multiplication particularly. Let's have another example.
दिस मीन्स के हमने सही डिफाइन किया। सही डिफाइन सही किया हुआ है। हम ये कहेंगे कि ये पॉसिबल नहीं है इस तरह करना उस सेट में, बस बाकी प्रॉपर्टीज होल्ड करती होंगी लेकिन ये वाली नहीं करती। ठीक है, मे बी अदर प्रॉपर्टीज भी हों जो कि होल्ड नहीं करती, कुछ प्रॉपर्टीज होल्ड करेंगी कुछ नहीं करेंगी, तो इट डिपेंड्स के कौन सी प्रॉपर्टीज होल्ड करती हैं। बट इन शॉर्ट इट इज नॉट अ वेक्टर स्पेस। सारी 10 की 10 प्रॉपर्टी सेटिस्फाई नहीं हो रही, कुछ 1 2 5 4 हो सकती हैं, बट वी कैन से दैट दिस स्पेस और दिस Rn along with this addition and scalar multiplication satisfy only these properties, but this is not a vector space. So इसकी implication क्या है? इसकी एप्लीकेशन मैंने आपको पहले ही बताया था कि लीनियर सिस्टम के जो सॉल्यूशंस है ना, जो यूक्लिडियन वेक्टर स्पेसेस हैं, उनको हम इस तरह एप्लीकेशन नहीं, मैं implication की बात कर रहा था कि अगर ये होल्ड नहीं करता है and this is not an Euclidean vector space, फिर what does that mean? That means कि अगर कोई भी अगर आप लीनियर सिस्टम के रेफरेंस से बात करते हैं तो लीनियर सिस्टम के जो सॉल्यूशंस हैं अगर वो यूक्लिडियन वेक्टर स्पेस ना बनाए, then we cannot, you can say that we cannot independently work in that set of solutions. Well, those solutions are very, very special kind of solutions. They satisfy certain kind of properties. They do not satisfy some other kind of properties. So we have to be very, very careful in dealing with those kind of solutions. Okay? Like हम assume करते हैं कि फिर general laws इस पे hold नहीं करेंगे और जो भी law इसमें हम apply करेंगे वो हमें prove करना पड़ेगा पहले. Definitely. Okay. This is what the implication of these things on the solution of linear systems. देखिए, solution of linear systems में मैंने आपको पहले क्या बताया था? पहली क्लोयर प्रॉपर्टी क्या स्पेसिफाई आपको शो करती है या आपको क्या उसकी क्या इम्प्लीकेशन है कि अगर आपके पास दो सॉल्यूशन है, उन दोनों को ऐड करें तो तीसरा जो होगा वो भी सॉल्यूशन होगा या नहीं, मींस उसी स्पेस को, सॉल्यूशन स्पेस को बिलोंग करेगा या नहीं. सो यू हैव टू बी, मतलब अगर ये सारी प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करता है तो फिर यू कैन इमेजिन व्हाट काइंड ऑफ प्रॉपर्टीज दोस सॉल्यूशंस दे सेटिस्फाई. ठीक है. But I was thinking that belonging to the same solution space doesn't really mean that it is the solution to the same problem. Yes, it should be. Otherwise, it doesn't belong to the same space. अगर आपके पास देखिए क्लोयर प्रॉपर्टी क्या है, कोई से दो एलिमेंट्स लें किसी एक स्पेस के, उसका सम भी उसी स्पेस को बिलोंग करना चाहिए. अगर वो सॉल्यूशन स्पेस है, आपके पास दो सॉल्यूशन है, उसका सम अगर उसी स्पेस में बिलोंग करता है तो वो भी एक सॉल्यूशन होगा. अदरवाइज तो सॉल्यूशन स्पेस को बिलोंग नहीं करना चाहिए ना वो. तो क्लियर प्रॉपर्टी से अगर जनरली हम अगर सिंगल डायमेंशन में बात करें, हम कार्टेशियन प्लेन की बात करें और मैं कहूं कि x का सॉल्यूशन 2 भी है और 3 भी है, तो इसका ये मतलब तो नहीं होगा कि x का सॉल्यूशन 5 भी है. डेफिनेटली होना चाहिए. इट शुड बी अकॉर्डिंग टू दीस प्रॉपर्टीज. ठीक है, वन डायमेंशन में जो इक्वेशन है हम उसकी बात नहीं कर रहे, हम लीनियर सिस्टम्स की बात कर रहे हैं. ठीक है, इनफिनिट मेनी सॉल्यूशंस की बात कर रहे हैं. देखिए लीनियर सिस्टम में कितने पॉसिबिलिटीज हैं, या तो एक सॉल्यूशन होगा, उसकी तो स्पेस बन ही नहीं सकती. इनफिनिट मेनी सॉल्यूशंस होंगे या नो सॉल्यूशन होंगे. फाइनाइट मेनी सॉल्यूशन नहीं हो सकते. ठीक है. आपके पास इनफिनिट मेनी सॉल्यूशंस हैं. आप उन इनफिनिट मेनी सॉल्यूशंस को हमने क्या करना है, एनालाइज करना है. उसमें से डिफरेंट काइंड ऑफ इंफॉर्मेशन हमने लेनी है, वहां से एक्सट्रैक्ट करनी है. सो वी नीड टू नो दैट whether these solutions or the set of solution it satisfies certain kind of properties or not. Okay, if all these properties are being satisfied by those solutions, then we say that that solution space is a vector space. Once you say that this space is a vector space, I immediately understand that the solutions or the elements of this space, they satisfy certain properties, these 10 properties. So I can play with those solutions with a lot of independence, because I know what kind of operations I can apply on those solutions. I hope you get it. I think I get it. Now, let's discuss what if we don't have Euclidean vector spaces.
let me take V as a matrix of order 2 cross 2. It is the set of 2 cross 2 matrices. Then what kind of elements this M2 contains? It obviously contains 2 cross 2 matrices, for example, A1, A2, A3, A4, and matrices are usually denoted by capital letters such that A1, A2, A3, A4, they belongs to R. So this M2 is a set of all 2 cross 2 matrices. Okay. Now I can prove that this set satisfies all those 10 properties. Okay. Now in that case, now the first property is what? Chlorine property. वहाँ पे we had a Euclidean vector space और उसके elements क्या थे? Vectors थे x, y. Now we have a set which contain matrices, 2 cross 2 matrices. Okay. अब हम क्या कहेंगे? हम कहेंगे let A and B belongs to M2. What does it mean? A is a 2 cross 2 matrix, B is a 2 cross 2 matrix. Okay. Then clear property कैसे proof होगी? हमने क्या proof करना है? To prove A2 plus B2 belongs to M2. अब आपके पास अगर A2, B2 दो मैट्रिसेस हैं तो 2 क्रॉस 2 के तो ये किस टाइप के होंगे? A1, A2, A3, A4 और B किस टाइप का होगा? B1, B2, B3, B4. ठीक है। अब हम कंसीडर करते हैं, हमने प्रूफ क्या करना है कि इसका सम बिलोंग करता है M2 को या नहीं। हम कंसीडर करेंगे A plus B 2 तो ये क्या होगा? अब मैट्रिक्स की एडिशन आपको पता है क्या होती है? यूजुअल एडिशन ऑफ मैट्रिसेस, रिस्पेक्टिव एलिमेंट्स में ऐड होना। तो ये क्या होगा? A1 plus B1, A2 plus B2, A3 plus B3 and A4 plus B4. अब ये 2 क्रॉस 2 मैट्रिक्स है। अगर ये है तो ये M2 क्रॉस 2 को बिलोंग करेगा। ठीक है, तो पहली प्रॉपर्टी हमारी प्रूफ होगी क्योंकि M2 में सारे क्या है? 2 क्रॉस 2 मैट्रिसेस हैं। तो दो मैट्रिसेस 2 क्रॉस 2 को ऐड करें तो आंसर 2 क्रॉस 2 मैट्रिक्स आता है, तो डेफिनेटली इस सेट को बिलोंग करेगा। तो आपकी क्लियर प्रॉपर्टी होल्ड करती है। इसी तरह एसोसिएटिव और बाकी प्रॉपर्टीज को सेटिस्फाई देख सकते हैं करती हैं नहीं। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी भी होल्ड करेगी। आइडेंटिटी एलिमेंट इसमें क्या होगा? कौन सा ऐसा एलिमेंट है जो इसमें A2 में ऐड करें तो A2 आए? Null matrix of order 2. O matrix of order 2, null matrix. Additive inverse क्या होगा? किसी भी मैट्रिक्स का A2 का वो होगा negative A2, ठीक है? Which will give us O matrix. So we can prove all these properties for this kind of set, a space. अब अगर मैं यहाँ पे एक और कंडीशन लगा दूं, M2 is a set of matrices such that they are 2 cross 2 matrices. Their entries are real numbers and their determinant is 0. Can we prove this property now? अब M2 में कौन से मैट्रिसेस हैं? 2 क्रॉस 2 मैट्रिसेस हैं जिनका डिटर्मिनेंट 0 है। ठीक है, हम कहते हैं कि A2 और B2 M2 को बिलोंग करते हैं। वो 2 क्रॉस 2 मैट्रिसेस हैं, इस टाइप के होंगे। प्लस हमें क्या पता है कि डिटर्मिनेंट ऑफ A2 क्या है? वो 0 है और डिटर्मिनेंट ऑफ B2 वो भी 0 है। अब हमने प्रूफ करना है कि A plus B M2 को बिलोंग करता है। हमने दो चीजें प्रूफ करनी। A2 plus B2 जो है A या A plus B, ये 2 क्रॉस 2 मैट्रिक्स है और इसका डिटर्मिनेंट 0 है। यहाँ पे पहले केस में हमने प्रूफ कर दिया कि A2 plus B2 जो है 2 क्रॉस 2 मैट्रिक्स है, बट स्टिल वी कैनॉट से दैट इट बिलोंग्स टू M2 too. Now what we have to prove again further is that determinant of A plus B is equal to 0. हमने ये प्रूफ करना। Can we prove this? No sir. Sir, I think generally equal नहीं था हमारे पास। determinant of A plus B is equal to determinant of A plus determinant of B. Yes.
ये तो property- सेपरेट डिटरमिनेंट्स के सम के इक्वल नहीं होता तो हम नहीं कर सकते। determinant of A plus determinant of B, this property does not hold. It is true only in the product of matrices. Determinant of A into B is equal to determinant of A into determinant of B. This is true, but this one is not true. So we cannot prove that determinant of A plus B is 0. With this information, that determinant of A is 0, determinant of B is 0. We cannot prove that the sum is sum of AB का determinant 0 होगा. We cannot prove it. If we cannot prove it, then what? We can say that A2 plus B2 does not belongs to M2. हमने प्रूव करना था कि इसको बिलोंग करता है, तो प्रूव तो नहीं हुआ बल्कि डिसप्रूव हो गया। डिसप्रूव करने के लिए क्या करेंगे, एक काउंटर एग्जांपल देंगे। हम दो मैट्रिसेस लेते हैं एक हम ले लेते हैं फॉर एग्जांपल 2 4 2 4, इसका डिटरमिनेंट 0 है। यहां पे मैं ले लेता हूं 3 0 0 0 फॉर एग्जांपल। अब ए और बी दोनों का डिटरमिनेंट 0 है। ए प्लस बी अगर करें तो फिर क्या डिटरमिनेंट आता है, 0 आता है? नो सर, नहीं आता ना। इसका मतलब क्या है कि डिटरमिनेंट ऑफ ए प्लस बी इज नॉट इक्वल टू 0 with this counter example. It means A2 plus B2 does not belongs to M2. What does it mean? M2 does not satisfy the first clear property. If it doesn't satisfy one property, we say that this set is not a vector space. Okay? I hope you get it. If you have any question, you can ask me. You have to look at the conditions in the set as well. When an element belongs to this set, this is very important. अगर मैं यहाँ पे कह दूं डिटर्मिनेंट की जगह कोई और कंडीशन लगा दें इसमें। A is a 2 cross 2 symmetric matrix. A is a 2 cross 2 symmetric matrix. M2, which contains matrices A, is a 2 cross 2 symmetric matrix. Okay. Yeah. अब symmetric matrix किस टाइप का होता है? क्या होता है symmetric matrix? तो जिसका अगर ट्रांसपोज ट्रांसपोज A transpose equal to A होना चाहिए। ठीक है। अब आपने दो मैट्रिसेस लेने हैं, you don't need to specify them. प्रॉपर्टी क्या है, सिमेट्रिक क्या है। हमने क्या कहा कि A और B जो है ना वो M2 को बिलोंग करते हैं, तो ये दोनों क्या होंगे, सिमेट्रिक होंगे। मींस A ट्रांसपोज A होगा, ठीक है, और B ट्रांसपोज जो है वो B होगा। हमने प्रूफ क्या करना है कि A प्लस B बिलोंग करता है M2 को, ठीक है। तो ये कब बिलोंग करेगा, जब ये सिमेट्रिक होगा, ठीक है। तो सिमेट्रिक के लिए क्या होगा, A प्लस B होल ट्रांसपोज is equal to A transpose plus B transpose. ये प्रॉपर्टी होल्ड करती है ना, ठीक है। A transpose किसके इक्वल है, with this A के इक्वल और B transpose B के इक्वल। What does it mean? It means that A plus B whole transpose is equal to A plus B. This इसका मतलब क्या है कि A plus B symmetric है। अगर ये symmetric है तो what does it mean? A plus B belongs to M2. So the first property is satisfied. It means this M2 set its elements satisfy the clear property. I hope you get it. If you have any further question, you can ask me. Otherwise, we are going to stop today here. Try to look at the notes and lecture slides of the Euclidean vector spaces and general vector spaces, and try some examples
try to prove all these 10 properties for Euclidean vector spaces as well as some matrix spaces. We'll discuss some other examples related to general vector spaces as well as Euclidean vector spaces in the next lecture. This is basically a little bit abstract kind of concept of vector spaces. You have to concentrate on this a little more. If you have any confusion, you can ask me in the next lecture. Okay. In the next lecture, there will be a quiz.